Now, before going to question number 11, exercise 5.3, I will say you will try question number 10. There are two sub questions. If you think properly, calmly, you think over the question, you are able to solve that. I am not going to take that question. Let us see question 11. If the sum of the first n terms of an AP is given by 4n minus n square, what is the first term S1? What is the second term S2? Similarly, what is find the third term, 10th term and the nth term? You can find fourth term also, you can find fifth term, whatever is there as per your choice. But in question it is given find third, 10th and nth term. Let us see. Okay, Sn is given to us. Okay, see the solution. Here Sn is equal to 4n minus n square. This is given to you. You want to find the first term. You just put n is equal to 1. So S1, sum of the first term. It is only single term. So first term will remain as it is. So S1 is also your first term. Okay. So 4 into 1 minus 1 square. Okay. I will put here big bracket or without that. So what it implies? So S1 is nothing but your A1. That is S1, and that is 4 minus 1, and that is 3. So you got your first term. Okay. So you got first term. So what is the first term? So we got implies first term is 3. Okay, fine. Then what is the second term? So for second term, you use the same sum which is given. The sum of the first n terms is 4n minus n square is given to you. Use that. Now, Sn is equal to 4n minus n square. So put n is equal to 2. What is the meaning? S is S2, sum of the first two terms. So it is a sum of the first two terms. So from first two terms you subtract S1 or the first term, you are going to get your second term. So first you calculate sum of the first two terms. So 4 into 2 minus 2 square. So 8 minus 4, and you are going to get 4. So this is your S2. So therefore, what is your A2? A2 is S2 minus S1. Okay, and that is 4 minus S1. S1 is 3, and you are getting. So therefore your A1, second term. You got second term is 1. Now we are talking about AP only. So A2 minus A1, you are going to get D. Now D is equal to A2 minus A1, and it implies that value of D will be A2. A2 is 1 minus A1. So 1 minus 3. Okay. Let us see. So it implies your value of D is minus 2. Now, so you know the first term, you know the common difference D. You can find now third term, 10th term and nth term. Okay. Now we know that An is equal to A plus n minus 1 into D. Okay. So you want to find third term. So A3. First term A. What is value of A? A1 and A is one and the same. So 3 plus 3 minus 1 into D. D is minus 2. So 2 into minus 2, 3 minus 4 and minus 1. So you got, so therefore your third term you got it is minus 1. Okay. Similarly, A10 is equal to A. A is 3 plus 10 minus 1 into minus 2, 3
plus 10 minus 1 is 9 into minus 2. So that is 3 minus 18, so that is minus 15. So therefore your 10th term is minus 15. Okay. Also you want to calculate your nth term. So an is equal to a is 3 plus n minus 1 into d is minus 2. So simplify this, plus minus 2 into n minus 1. You can simplify this rearranging the terms of 2 and this. So this will minus 2, so this plus will become minus, and now 3 minus 2n plus 2, and that is 3 plus 2 is 5 minus 2n. So your nth term is 5 minus 2n. Okay, so your answer, you have to write k1 first term. So your, what is the sum of the first two terms? Okay, then what is the second term? Similarly find third term, the 10th term and the nth term. What is the first term? So a1, so a1 is 3. Then sum of the, what is the sum of the first two terms? So s2. Okay, so your s2 is 4. Then what they said, what is the second term? So a2. So what is second term? a2 is 1. Then you have to calculate a3, third term. So third term is minus 1. Then 10th term. So 10th term is minus 15. And finally an. So an is 5 minus 2n. So this is your answer. Okay? Yes. Interesting sum. Hope you have understood it. Now, question number 12, 13 and 14 are on the similar lines with a slight variation in the data provided to you. थोड़ा सा फर्क है. देखेंगे हम पहला क्वेश्चन. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. Divisible by 6. अब क्या करेंगे? 6 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो 40 तक लिखना है. तो आपको फर्स्ट टर्म, सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स विल बी 6. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. सो 6 10 60. 10 नंबर मिले आपको. 6 10 60. यहाँ 40 की बात कर रहे हैं, तो 40वां नंबर कौन सा होगा? आप कैलकुलेट कीजिए. रफ वर्क आपको करना होगा. ज़रूरी नहीं है लास्ट नंबर ढूंढने की यहाँ पर. ओके, सम ऑफ द फर्स्ट 40 बोले हैं, तो पहले 2 3 लिखे हमने, डॉट 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 करके छोड़ दिए, कोई बात नहीं. ओके, हियर A6, of course they will form an AB. So 12 minus 6, that is B is 2. Okay, N, how many N? N is 40. Sum of the first 40 terms. Okay, now Sn is equal to n by 22 2a plus n minus 1 into d. So sum of the first 40 positive integers. So 40 divided by 2. 2 into a is 6. N is 40 minus 1, d is 6. Okay, let us see. So therefore S40 is equal to 20. 2 into 6, 12 plus 39 into 6. Okay, so 20, 12, 6 9s are 54, write down 4, carry 5, 6 3s are 18. 18 plus 5 is 23.
So 20 multiplied by, so this will be multiply this 246 multiplied by 2, so this will be 4920. Okay, so answer the required sum is 4920. Hope you have understood. You can try question number 13 and 14 on your own. Think over it. It is not that difficult. Okay. Now, question number 15, 16 and 17 are the word problems. Okay. Whenever word problems are there, you have to read twice the question and try to find out the meaning, what the question want to say, and then you start solving your sum. So here, question number 15, 16 and 17, I am going to solve one question, question number 15. Let us see. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond certain dates as follows. Okay, rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second, rupees 300 for the third, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? You understood this? What is this? So, you might have seen somewhere where the construction work is going on. If you observe carefully, you might have seen there is a board specifying the date of completion of the project, so and so. So, when the work begins, there is a deal between the two parties. Okay, one who is doing the work and one who is getting the work done. Okay, so they get a written agreement that you have to complete this work by so and so date, and if not, whatever the terms, the penalty. So in this case, penalty per day, 1 day late is rupees 50. So it is increasing by 50. So what you can say, if you observe carefully, okay, for the first day penalty is rupees 200. The second day is 250. So it is increasing by 50. So the amount of penalty will form an AP over here. Okay, that each day it is increasing by 50 rupees. So it forms an AP. Okay, so let us proceed. Now the contractor has delayed by 30 days. So what should be the amount paid by the contractor as a penalty, that you have to find out. Okay, let us write down here solution. So if you are late by first 1 day, you have to pay rupees 250. So it is 250. As we said, it forms an AP. For the second day 250, for the third day 300. So the difference, the common difference is 50. Okay, contractor is late in completion to complete his project, in completion of the project by 30 days. So N is 30. So you have to find
how much amount he has to pay as a penalty for 30 days. Now, divided by 2. First day 250. Sorry, not first day 250. It is 200. Sorry, it is 200. So first day is 200. Then by second day 250 and third day 300 and so on. Okay, so 2 into 200 plus m. 30 days, 30 minus 1 and into 50. Okay, so 15 400 plus 29 into 15. So therefore 15 multiplied by 400, 29 5s are 145, 1450. So 15 multiplied by 1850. Okay, so if you multiply, do the rough work. 1850 multiplied by 15. 15 zeros are 0, 15 5 is 75, 7, 15 8 is 120, 127, write down 7, carry 12, 15 ones are 15 plus 12. So it is 27750. Okay, so answer, the contractor has to pay rupees 27,750 as a penalty for 30 days. Hope you have understood the sum. We will write the answer in words. So write, the contractor has to pay rupees 27,750 as penalty, as a penalty for 30 days. Okay, hope you have understood this sum. Let us see question number 18, interesting one. A spiral is made above successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.52 as shown in figure 5.4 from the textbook in CRT. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? You have to take pi is equal to 22/7. Try to understand this question. देखिए एक स्पाइरल बना है, ओके, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उस पर सेंटर ए लिया, पहला वाला ए से, दूसरा वाला सेमी सर्कल बी से बनता है, तीसरा वाला वापस ए सेंटर से बनता है, चौथा वाला बी से, पांचवा ए से, छठा बी से, सातवां ए से, इस तरह से 13 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल फॉर्म्ड इन सच वे. डायग्राम मैंने पहले जो ड्रॉ किया है, सबसे पहले स्टार्टिंग विद ए, डेटा में लिखा है, सो ए से चालू किया तो ये सेमी सर्कल बना. ओके, तो इसका रेडियस कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ए से लेके बी तक भी आप बोल सकते हो. ओके, 0.5 सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि यहाँ तक है, ये 0.5, ये भी 0.5, यहाँ पॉइंट नहीं दिया, नो प्रॉब्लम. ओके, दूसरा 1 सेंटीमीटर, सर्कल विद सेमी सर्कल विद सेंटर बी. ओके 1, तो ये 0.5, ये भी 0.5, इसलिए हमने यहाँ से इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल. तो ये जो है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगा,
एंड इस तरह से, तो एक सेमी सर्कल। अभी तीसरा, विथ सेंटर दिस 1.5, सो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, यहाँ से यहाँ 0.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो ये बड़ा सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तीसरा चौथा भी यहाँ से लेके इस तरह से हम ड्रॉ करते जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर ये समझ में आए डायग्राम तो हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल्स फॉर्म्स एन AP because 0.5, 1, 1.5 and so on. So radii of AP forms an radii of semicircles forms an AP. So we will write down here solution. The given radii forms an AP with now semicircle. The length of semicircle means circumference. So pi 2 pi r is a semi-circumference of a circle. So pi r is a circumference of a semicircle. So pi r के जगह हम a1 यूज करेंगे क्योंकि यहाँ AP is first term, second term and so on. Okay. Let us see. Textbook में hint भी दी है. I am not using similar lines I am going, but I am not writing L1, L2 and so on. Okay. With A1, so A1 is 0.5, A2 is 1, A3 is 1.5 and so on up to A13. Okay, up to A13. Now here first term is 0.5, D is A3 minus A2, 1.5 minus 1, that is 0.5, whatever you can calculate, A2 minus A1, so D is 0.5. Now total length of this semicircle आपको निकालना है 13 semicircles, that is spiral बनता है, 13 semicircles से spiral बनता है. Okay, so now total length of this spiral is given by पहला सेमी सर्कल, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा पाई आर. पाई आर की जगह हम A1 यूज कर रहे हैं, सो पाई A1. दूसरी का होगा पाई A2 एंड सो ऑन. कितने सेमी सर्कल से 13, तो लास्ट होगा पाई A13. ओके, व्हाट इज कॉमन हियर इफ यू ऑब्जर्व, सो पाई इज कॉमन, सो व्हाट इज दिस A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन up to 13. So all the, अगर आप रेडियाई ऐड करते जाएंगे तो आपको स्पाइरल बनता है. ओके, तो ऐसे कितने से रेडियाई है 13 रेडियाई है. कीप ऑन एडिंग. सो 13 रेडियाई, सम ऑफ द फर्स्ट 13 रेडियाई इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्पाइरल फॉर्म्ड बाय 13 consecutive semicircles. So pi multiplied by this is nothing but S13. Okay, so what is, how will you calculate? It can be calculated pi into S13. So formula is n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. Okay, curly bracket over. So use pi is 22 by 7. They said how many 13 semicircles. So 13 by 2. What is first? A1 is 0.5 plus 13 minus 1 into D. D is 0.5. Fine. So, if you simplify, so 22 by 7, no problem. Multiply into bracket 13 by 2. 2 into 0.5 is 1. 12 into 0.5. So 12 multiplied by 0.5. So 22 by 7 into 13 by 2. So this will be 1. 12 into 0.5, 12 by the 60, so 6.0. Okay, 6.0. So 22 by 7
into 13 by 2 multiplied by 6.0 plus 1, that is 7. So what is the final answer? 2 11s are 7, 7 cancels. So 11 into 13, and that is 143. Okay, so give the right answer. The length of spiral, the length of the spiral is 143 centimeter. Hope you have understood this sum. Try to understand. Go through it twice, thrice. Okay. Sure, you are going to understand this. Okay. Hello students, let us see question number 19 of exercise 5.3. Word problem, interesting one. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5 of your NCERT textbook. In how many rows are 200 logs placed? And how many logs are in the top row? Okay, the diagram is given in the textbook. For your reference, I have drawn here a diagram. Okay, it is not exactly similar to textbook. Okay, मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की. क्या है, 200 लॉग्स है वो अरेंज किए हैं. लॉग्स कैसे अरेंज करेंगे? सबसे नीचे ज़्यादा हो गए, उसके ऊपर इस तरह से. सो इट विल लुक लाइक अ पिरामिड. अगर आप ढंग से देख, पिरामिड बोले हो या फिर एग्जैक्ट पिरामिड तो नहीं हो सकता, लेकिन उस तरह का कुछ फिगर बनेगा. तो देखो सबसे नीचे, तो ये अपने क्वेश्चन में ऐसा है कि सबसे लास्ट रो में 20 लॉग्स रखे, सेकेंड लास्ट में एक कम 19, थर्ड लास्ट में एक कम 18, उससे ऊपर वाले इस तरह से. तो क्वेश्चन है हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड. इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड. तो 200 लॉग के लिए रखने के लिए कितनी रोज बनाई जाएगी? 1 2 3 4. नीचे से हम ऊपर गिनेंगे या ऊपर से नीचे, किस तरह कैसे भी, यानी डेटा में नीचे से ऊपर प्लेसिंग करते हैं हम. जनरली लॉग्स प्लेस करेंगे तो नीचे पहले, उसके ऊपर इस तरह से. ओके, और कितनी रो बनेगी पूछा है, और सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स होंगे वो ये पूछा है. कितने लॉग्स है अपने पास? 200 लॉग्स है. देखो यहाँ पर ये डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. 80 मैंने 80 ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, उसके ऊपर एक कम होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम. इस तरह से अरेंज किए. तो 200 लॉग के लिए कितनी रोज बनेगी, और सबसे टॉप वाले में कितने लॉग्स होंगे, नंबर उसका आपको फाइंड करना है. हमारे पास कितने लॉग्स है? 200 लॉग्स है. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस explanation of what question wants to say. अभी हम solution देखेंगे. Okay, तो ये जो arrangement है, it itself is an example of an arithmetic progression. So we can write here this way. Here, okay, हम अभी क्या करेंगे, हम ऊपर से, सबसे ऊपर में कितने लॉग से पूछा है वो लोग ने, तो सबसे ऊपर हमें मालूम नहीं, लेकिन उस सेकंड वाले में कितने होगा, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं. सबसे ऊपर में कितने हो गए नहीं मालूम, लेकिन उसके नीचे वाले में ऊपर वाले से एक ज़्यादा, 1 मोर. तीसरे रो में कितने हो गए, सेकंड से एक ज़्यादा, इस तरह से. अंडरस्टूड? देखो तो हम क्या करेंगे, हियर कितने लॉग से 200. सो टोटल SN हम 200 लिखेंगे. ओके, अभी हम सम्स के लिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं. सो हमारे लास्ट रो जो है उसमें डेटा में दिया है 20 लॉग्स इन द बॉटम रो. सो AN लास्ट, सो यू कैन राइट हियर AN is 20. Okay, AN is 20. And what will be the D here? D. Okay,
हम नीचे से बात करेंगे या ऊपर से? मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, सबसे ऊपर कितने मालूम, लेकिन दूसरे वाले में एक ज़्यादा, तीसरे वाले में ऊपर दूसरे वाले से एक ज़्यादा, इस तरह से। सो डी इज 1 हियर। ओके, आगे देखो। ओके, सो लेट the number of rows be n and the number of logs in the topmost row be a। सबसे ऊपर वाले रो में a logs है, हम मानेंगे। ओके, ना we know that n is equal to a plus n minus 1 into d। लास्ट वाले रो में कितने लॉग्स है तो हमें मालूम है 20, तो हम ये 20 लास्ट वाला, दिस इज द लास्ट टर्म, सो 20। वी डोंट नो द फर्स्ट टर्म, वी डोंट नो द नंबर ऑफ रोज आल्सो। ओके, सो वी कैन राइट एनीथिंग n minus 1 d is 1। ओके, सो a plus n minus 1, 1 into n is n minus 1। okay, so therefore 21 is equal to a plus n। okay, we call this equation 1। yes, now also Sn is n by 2, first term plus last term। you will say हमें फर्स्ट टर्म तो मालूम नहीं है, बट वी विल राइट a in the terms of n। so from equation 1 हमें मिलता है now, so Sn is 200 n by 2, a can be written as 21 minus n, n वहाँ जाएगा, so a will be 21 minus n plus an, that is the value of last term, that is 20। okay, तो इस तरह से, so 2 will go here, so this will become 400 is equal to n, 21 minus n plus 20। so therefore n 41 minus n 400, 41n minus n square, so n square minus 41n plus 400 is equal to 0। ये इक्वेशन मिला। try to solve this equation। okay, let us try to solve this equation। hope you have understood up to here। okay, so question number 19 we have arrived up to here, and n square minus 41n plus 400 is equal to 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। okay, let us how to solve। 1 into 400 is 400 and minus 41 by splitting the middle term find two numbers whose product is plus 400 and whose sum is minus 41। let us do rough work here। okay, find the factors of 400। okay, what are the factors of 400? 4 into 100, so 2 into 2, 2 into 5 into 2 into 5। let us see, take 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 5 is 25। yes, 16 into 16 or 16 plus 25 कितने होते हैं? 16 plus 25 होते हैं 41। okay, so this is the rough work। so how we will write this? so therefore n square minus 16n minus 25n plus 400 is equal to 0। so therefore यहाँ ब्रैकेट के लिए ये दो टर्म्स ब्रैकेट में आएंगे, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस साइन विल बिकम माइनस। ओके, now what is common? n is common,
n माइनस 16 व्हाट इज कॉमन, अभी हमने देखा 25 16 और 16 25 का 400, सो 25 बाहर निकालेंगे तो अंदर आएगा n माइनस 16. ओके, so therefore n minus 16 and n minus 25 is equal to 0. So therefore n minus 16 is equal to 0 or n minus 25 is equal to 0. So this implies n is equal to 16 and this implies n is equal to 25. Okay, now let us see. Now अभी हम n is equal to 16 पकड़ेंगे. Now if n is equal to 16 then equation 1, हमारा equation 1 क्या था? equation 1 था 21 is equal to a plus n. Okay, so then a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? Then a is equal to, okay, a is equal to 21 minus n and that will be 21 minus n, n is 16, so a की वैल्यू आएगी 5. Okay, so when n is 16, so this implies n is 16 then a is 5. Okay, and so this is valid. Let us see again. If n is 25 then n is 25 then a will be 21 minus 25, so therefore a will be minus 4. Okay, which is not valid. Okay, not valid. Why not valid? Number of logs cannot be negative. Okay, so फाइनल आंसर, लोग ने हमें पूछा था कितने 200 लॉग्स के लिए कितने रोज बनेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ तो ठीक है n16 25 दोनों वैलिड है, लेकिन a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, a की वैल्यू नेगेटिव आई है, n is 25, a की वैल्यू नेगेटिव आई है, सो n is not this, n is equal to 25 is not acceptable. तो फिर एक्सेप्टेबल क्या है? n is equal to 16 एंड कितने रोज रहेंगे, टॉप मोस्ट रो में कितना रहेगा? 5. ओके, सो आंसर नंबर ऑफ rows will be 60 and number of logs in the topmost row will be 5. This is your sum. Hope you have understood this sum. Okay, important sum. Let us see question number 20 of exercise 5.3. This will be our last sum of this exercise, okay, and this lesson also. I am reading the question. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure 5.6 of your NCERT textbook. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Okay, here figure is given in the textbook. Here I have written figure 5.6. I have not drawn this. I will try to explain you drawing the figure in my way. Okay, so okay,
say here is a bucket. Okay, here is a bucket, you can see. So this is the first potato is placed at a distance. This is first potato. For potato I will first potato. So this distance is from bucket to here, it is 5 meter. Okay, and then second potato is at a distance of 3 meters. See, 3 meters. Okay, this distance will be 3 meter. Okay, I will write. Then third, fourth potato, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, टेंथ. ओके, और यहाँ पर इस तरह एक झाड़ बताया है. ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम है. वो लड़की है, कंपटीटर इज अ गर्ल. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, ट्राई टू सी व्हाट आई हैव ड्रॉन. राइट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. देखिए, पहला पोटैटो ये 5 मीटर्स है. ओके ओके, पहला पोटैटो जो है वो बकेट से 5 मीटर दूरी पे रखा गया है. उसके बाद दूसरा पोटैटो और पहले वाले में 3 मीटर का डिस्टेंस है. दूसरे और तीसरे में 3 मीटर, तीसरे और चौथे में 3 मीटर, चौथे और पांचवे में 3 मीटर. ओके, जो लड़की है वो यहाँ से दौड़ना शुरू करती है. पहले वाले आलू तक जाती है, पोटैटो तक उठाती है, यहाँ बकेट में आके रखती है. यहाँ से वापस दौड़ना शुरू करती है, दूसरे आलू तक उठाती है, वापस आती है, बकेट में रखती है. यहाँ से वापस जाती है, तीसरे आलू तक उठाती है, वापस रखती है. इस तरह से she runs to and fro till all the potatoes are picked up. So you have to find the total distance covered or ran by the competitor. Hope you have understood the question. So what you can say, पहला पोटैटो कितने डिस्टेंस पे है? 5 मीटर पे पोटैटो. दूसरा 3 मीटर पे, पहले वाले से 3 मीटर पे. ओके, सो व्हाट यू कैन से हियर, तो डिस्टेंस है, यहाँ सब मामला डिस्टेंस का है. सो हियर वी विल राइट हियर ए इज 5. नाउ अगर दूसरे पोटैटो की बात करेंगे तो बकेट से कितने डिस्टेंस पे है? 5 + 3. ओके, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर्स. ओके, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 3 मीटर एंड सो ऑन. अगर सेकंड पोटैटो आलू से कितने दूरी पे है तो वो कितना है? 5 + 3, 8 मीटर्स पे दूरी पे है. तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा पोटैटो बकेट से कितने दूरी पे है तो 5 + 3 + 3 11 मीटर्स दूरी पे है. इस तरह से. तो अगर पहला पोटैटो उठाना है तो लड़के को कितना दौड़ना है? यहाँ से 5 और यहाँ से 5, 10 मीटर दौड़ी पहला आलू उठाने के लिए. दूसरा आलू उठाने के लिए यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक वापस 8. ओके, सो 16 मीटर दौड़ी एंड सो ऑन. सो आई होप you got the idea. We will see here. Okay, A is 5, common difference is 3, and how many potatoes are there? N is 10. Okay, so it's very simple. Okay, और ये जो डिस्टेंस है डबल हो रहा है और उसका सम हो रहा है, एडिशन टोटल. ओके, पहले 10, बाद में 16, 10 और 16 26 एंड इस तरह से बढ़ते जाएगा. सो समेशन इज देयर. ओके, सो we know that distance covered is equal to 2 multiplied by S into N. Okay, so 2 Sn will be N by 2 2a plus N minus 1 into D. Okay, we will put here this bracket, curly bracket here. Okay, just so what we will get? 2 N is 10 by 2. Okay, A, what is our A? A is 5. N, we are talking about 10 potatoes. All the 10 potatoes should go in bucket. Okay,
So 10 minus 1 into d is 3. Okay. Now simplify. 2, I will remove these brackets. So this is 2 5 is 10 multiplied by 2 here. Now this small bracket 2 5 is 10 plus 10 minus 1 is 9. 9 into 3. Okay. So 9 into 3. So let us see. So 2 into 5 multiplied by 10 plus 9 into 3 is 27. Okay. So 10 into 37. So 370. So S. So total distance. Total distance. So answer the competitor has to run 370 meters. The competitor has to run 370 meters. Hope you have understood this. Okay, here we will end with our 5th lesson, arithmetic progressions. Okay.